Namaskar children, this is Poonam Bagga welcoming you to your maths class. We are studying chapter 15, Introduction to Graphs from class 8th maths. We have learnt what are line graphs and linear graphs. Today we are going to discuss about some applications of these. For this, first we introduce ourselves to independent and dependent variables. In our everyday life, we often see that one quantity affects another quantity, and out of these two quantities, one quantity is said to be an independent variable or control variable, and the other quantity is said to be a dependent variable, and the relation between such quantities can be shown through a graph. Let us take one example. Suppose that the cost of 1 pen is rupees 5. Then obviously the cost of 2 pens, it will be rupees 10. If I now think of purchasing 5 pens, then I will have to pay rupees 25. But if I now think of purchasing 10 pens, then obviously I will have to pay rupees 50. And now here there are two quantities. The first quantity is the number of pens and the second quantity is their cost. Now this first quantity, number of pens, it is in our hands how many pens we are purchasing. कितने pens हम purchase करेंगे ये हमारे हाथों में है, हमारे control में है. And so this quantity is said to be independent variable or say control variable. And now this quantity cost, it depends on the number of pens purchased. कितने pen purchase किए गए हैं उस नंबर पर डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ पेन्स, एंड सो दिस सेकेंड क्वांटिटी इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन सच वेरिएबल्स कैन बी शोन थ्रू अ ग्राफ. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल हियर. द मोर यू यूज अ फैसिलिटी द मोर यू पे फॉर इट. इफ मोर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड द बिल इज बाउंड टू बी हाई. जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा. अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा. इफ़ यू कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी द बिल विल बी लेस. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, दिस इज़ वन क्वांटिटी. इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड. यहाँ पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल ये डिपेंड करता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की गई है उस पर. And so we say that the quantity of electricity is an independent variable or sometimes control variable, and the amount of electric bill is the dependent variable, and the relation between such variables can be shown through a graph. तो यहाँ पर क्योंकि amount of bill depend कर रहा है on the quantity of electricity used, तो ये quantity of electricity used ये तो हो गया आपका independent variable या कह लीजिए control variable, और ये amount of electric bill, this is the dependent variable here. And now every time we can show this relationship through a graph, and in this segment we will be plotting many such graphs. We take example number 6 from your book, which again shows one independent variable and the other dependent variable. We see here the following table gives the quantity of petrol and its cost. Here we have been shown number of liters of petrol, 10 liters, 15 liters and so on, and the cost of petrol in rupees. Here we have been shown the cost. Now again you can think of this number of liters of petrol. This is the independent variable here. कितना लीटर्स पेट्रोल फिल करवाना है व्हीकल में, दिस इज अंडर आवर कंट्रोल, एंड सो दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर इन दिस क्वेश्चन. एंड अगेन द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, एंड सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. और अब हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को समझने के लिए इनका graph plot करेंगे. We will be plotting a graph to show the data. Okay, we have one graph paper here, and for this first we need to draw the x-axis and the y-axis. We take here, this is your vertical axis, the y-axis, this is the horizontal axis which we name as x-axis. We write here y-axis and here x-axis, and this point, this is the origin which represents the number 0. So here we are marking number 0. Now on the x-axis we will be taking this first quantity, number of liters of petrol. We will mark it on the x-axis, number of liters of petrol.
we are taking it along the x-axis, the independent variable. Now we need to mark these numbers 10, 15, 20, 25. तो पहला नंबर हम 5 ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25. Here we can write them. Now depending on the space that we have, we can choose the scale. यहाँ पर आप देखिए ये 1 single unit है, representing this 1 square. ये 1 square के along ये जो लेंथ है ये कहलाएगी आपकी 1 single unit. और अब ये आपकी चॉइस है, आप हर 1 single unit पर एक वैल्यू ले सकते हैं. Here we can take 5 liters, then after 1 single unit we can take 10 liters, again after 1 single unit we can take 15 liters and so on. Or as we have too much space, we can take 2 units to represent here 5 liters of petrol. तो यहाँ पर क्योंकि स्पेस ज़्यादा है और डेटा इस स्पेस के अंदर आ जाएगा अगर हम 2 यूनिट्स को भी लेकर चलें, तो ऐसे में here this 2 units will represent 5 liters of petrol. Then again after 2 units we will be taking 10 liters. Again after 2 units we can take here 15 liters. Again after 2 units we can take here 20 liters, and then here we have 25 liters. Again here what we see, as the data is comfortably settled within this space, so it's okay. अगर आपका डेटा ज़्यादा बड़ा होता, मान लीजिए कि आपको 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल तक शो करना होता, तो आपको ये 2 यूनिट्स लेने पर तो स्पेस पूरी नहीं पड़ती, तो ऐसे में आपको ये ज़्यादा फिगर लेना पड़ता. वही सेम डिस्टेंस, वही सेम यूनिट आप बड़े नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. इन दैट केस यू विल हैव टू चूज़ अ लार्जर स्केल. क्योंकि हमारा डेटा अभी 25 लीटर्स तक ही है और ये स्पेस अलाउ कर रही है हमें, तो हम यहाँ पर 2 यूनिट्स ले रहे हैं फॉर 5 लीटर्स पेट्रोल एंड सो ऑन. अगर स्पेस कम होती तो हम 1 सिंगल यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, या स्पेस ज़्यादा हो तो हम 3 यूनिट्स लेकर भी 5 लीटर्स पेट्रोल रिजेंबल कर सकते हैं यहाँ ग्राफ पे. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्पेस अवेलेबल एंड ऑल्सो ऑन द रेंज ऑफ द डेटा दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑन द ग्राफ पेपर. इट्स ओके. नाउ वी मूव टूवर्ड्स द y axis. On y axis we will be showing this dependent variable cost of petrol. We write here cost of petrol in rupees. Now here we have the numbers 500, 750, 1000 and 1250. इनके बीच में आप डिफरेंस देखिए, the difference is of 250. इन दोनों के बीच में भी 250 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 250 का डिफरेंस है. तो हम यहाँ y एक्सिस पर लेकर चल सकते हैं. We can take here first 250, then we can take 500, then we can take 750, then we can take 1000, or we can now take 1250. It's okay. आप ऐसे भी चल सकते हैं क्योंकि इन सब के बीच में डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, सेम है. और यू कैन चेंज द स्केल एंड टेक इट इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो. लेट मी ट्राई दैट ऑल्सो. हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि 100 यूनिट्स को लेकर चलें. वी कैन टेक हियर 100 रुपीज़, देन वी कैन टेक हियर 200, here we can take 300, here we can take 400, here we can take 500, then here 600. It depends on us. Here 700, then we are taking 800, 900, then we have 1000, then we have 1100, again 1200, then we can take 1300. It depends on us. आप इस तरह से भी ये स्केल चूज़ कर सकते हैं, या फिर हमने जैसे पहले मार्क किया था वो भी ठीक था. तो हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लगातार सक्सेसिव नंबर्स जो आ रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि यहाँ हमने 100 ले लिया, यहाँ 200 और फिर हम 400 पे सीधे चले जाएं. एवरी टाइम दिस डिफरेंस शुड बी द सेम, and here it is of 100 units. Okay, and here the difference is of 5 units. Now we first write the scale here. Scale on x axis, what we are taking, 2 units equal to 5 liters petrol. यही हमने represent किया है. And on y axis we need to write for both the axes, we have taken 1 single unit equal to ₹100. ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर 2 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को, और यहाँ पर 1 सिंगल यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 100 रुपीज़ को.
cost of petrol in rupees. So here we have written the scale. Now we will be marking the points here. What are the points? 10 and 500. ये mark करेंगे. Let us move here. 10 here and 500 here. यहाँ से 10 से आप perpendicularly ऊपर चलिए और 500 से right side की तरफ चलेंगे. We will get the point here. This is the first point. And then we have here 15 and 750. तो चलिए यहाँ पर 15 और 750 कहाँ मिलेगा? 700 और 800 के exactly बीच में. यहाँ पर हमें मिलेगा 750 and so now we will get the required point here. We mark it here. This is the required point and now we have the data. 20 corresponds to 1000. 20 यहाँ से लेंगे और 1000 यहाँ से. चलिए ये point हो जाएगा आपका this one. And then we have 25 and 1250. यहाँ पर 25 और 1250 लाई करेगा 1200 और 1300 के exactly बीच में यहाँ पर. और ऐसे में ये point आपका हो जाएगा यहाँ इस point पर. No, at this point here. Here we will get the point. Okay. In this way we have marked all these points and now we will be joining these points to get the graph. And as we now join these points, what we see? We are getting a straight line which is passing through the origin. This is the line which is passing through the origin and joining these points. In this way, we are in fact getting a linear graph. जब भी points एक straight line पर lie करें तो हम उसे क्या कहते हैं? We call it a linear graph. And what else we see here? Just go back to this data. आप देखेंगे यहाँ पर ये जो data दिया गया है, this is showing direct proportion or direct variation that we learnt in chapter 13. Just see here the two quantities, number of liters of petrol and the cost of petrol. अगर हम इसे x और इसे y से denote करें तो x1 upon y1 it is equal to 10 upon 500. Cancel this. This will be 1 upon 50. Similarly, if we divide 15 by 750, we get it 1 by 50. Similarly, 20 upon 1000 will be 1 by 50 and so this ratio will also be 1 by 50. तो ये सभी ratios equal आ रहे हैं और ऐसे में ये दोनों quantities direct proportion में हैं और we say these two quantities are directly proportional to each other. और यहाँ इनका graph कैसा है? एक straight line है and from here we get one conclusion. And what is it? The graph of a situation in which two quantities are in direct variation will always be linear. जब भी दो quantities direct variation में हो तो उनका graph linear graph होगा. इस तरह से हमें straight line मिलेगी. And also you can use this graph to get more information for this data. For this, let us take the number of liters of petrol, say to be 12 liters. अब 12 liters कहाँ पर आएगा? आप indicate कहाँ करेंगे? यहाँ आप देखिए 20 partitions है. Here we have 20 partitions in between 10 and 15 and the number of values is 5. Divide by 5 you get it 4. This means every fourth partition will give you the next value. तो fourth partition पर यहाँ आपको मिलेगा 11 और अगले fourth partition पर आपको मिलेगा 12 liters of petrol. And if we now follow here in this way, 12 liters of petrol से हम यहाँ से चलें यहाँ ग्राफ तक और फिर यहाँ से हम मुड़ जाएं towards the y-axis. What we are getting? We are getting it to be 600 and this means the cost of 12 liters of petrol will be 600 rupees. तो इस तरह से आप more information derive कर सकते हैं from the graph. पहले हम 12 liters से ऊपर चले vertically ग्राफ तक और फिर ग्राफ तक पहुँच के हम लेफ्ट साइड मुड़े टूवर्ड्स दिस वाई एक्सिस और यहाँ हमें इंडिकेट हो रही है वैल्यू 600. इसका मतलब क्या हुआ कि 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल कॉस्ट रुपीज 600. सिमिलरली सपोज नाउ वी वांट टू नो दैट हाउ मच लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी फिल्ड फॉर से रुपीज 800. फॉर दिस वी मूव टूवर्ड्स दिस पॉइंट रुपीज 800 हियर ऑन द वाई एक्सिस एंड नाउ इफ वी मूव हॉरिजॉन्टली टू द ग्राफ and then if we move here vertically downwards, what we see? We get this point and this point is relating to the quantity of petrol 16 liters. तो यहाँ से हम ये भी देख पा रहे हैं कि अगर हम 800 रुपीज़ पे करें
तो कितना लीटर पेट्रोल आएगा, इट विल बी 16 लीटर्स। और ये भी देख पा रहे हैं कि अगर 12 लीटर्स पेट्रोल हम फिल इन करें तो कितना कॉस्ट आएगा, इट विल बी ₹600। इन दिस वे एवरी टाइम वी कैन डिराइव मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ related to both these quantities. Okay, it's clear. Next we can take one more example from your book. It's example number 7, principal and simple interest. A bank gives 10% simple interest on deposits by senior citizens. Draw a graph to illustrate the relation between the sum deposited and simple interest earned. Find from your graph the annual interest obtainable for an investment of ₹250 and the investment one has to make to get an annual simple interest of ₹70. We will be answering these questions later on. First we will be drawing this graph. हमें graph बनाना है और graph बनाने के लिए हमें data चाहिए होगा. हमारी दो quantities क्या क्या हैं? First one is here the deposit, the sum deposited in the bank, and then the second one is the simple interest earned. पहली quantity है sum deposited and the second quantity is simple interest earned. इन दोनों quantities के बीच में पहले हमें graph बनाना होगा और ग्राफ बनाने के लिए डेटा चाहिए होगा. तो यहाँ ये डेटा हमें क्योंकि दिया नहीं गया है तो हम खुद से ही बना लेते हैं एक टेबल जहाँ पर हम अपनी तरफ से ही सम डिपॉजिट करते जाएंगे और अकॉर्डिंगली रेट हमें दिया गया है 10%, तो अकॉर्डिंगली हम पर ईयर जो कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर दिस वी ड्रॉ वन टेबल हियर. We have the sum deposited as the first quantity and simple interest for 1 year as the second quantity. Now if we take the sum deposited to be say ₹100, तो simple interest क्या होगा, हमें पता है it is given by principal into rate into time upon 100. ये हम पढ़ चुके हैं. And now the principal is ₹100 as we are selecting it to be ₹100. Rate is given to be 10% and the time is 1 year upon 100. Now this will be equal to ₹10. This is the simple interest for 1 year for an amount deposit which is ₹100. Then if we take the sum deposited to be ₹200, then what will be the interest earned? It will be equal to 200 into the rate is 10 into time is 1 year upon 100. And now you can cancel these two zeros, it will be equal to ₹20. Similarly, if we take this as ₹300, then what will be the interest earned? 300 into 10 into 1 upon 100. These zeros will be cancelled and it will be equal to ₹30. Similarly, if we take the sum deposited as ₹400, then the interest will be 400 into 10 into 1 अपॉन 100. हमारा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% और हम एक साल का इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं. वी गेट इट एज ₹40. सिमिलरली इफ वी नाउ टेक द सम डिपॉजिटेड एज ₹1000, then it will be 1000 into 10 into 1 upon 100 and this will be equal to ₹100. Now we have the table, the data, and now we will be plotting the graph. For this first we write down the points that need to be plotted. The points to be plotted are here we have 100 and 10, 100, 10. यहाँ से 100 ले रहे हैं, वहाँ से 10. Then the second point is 200 and 20, then 200, 20. Then we have the third one 300 and 30 from here, 300 here and 30 there. Fourth point 400 from here and 40 from here, and the last point that we have written here is 1000 and then we have this 100. तो अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. हियर वी टेक द ग्राफ पेपर. Here we have already marked the x-axis and the y-axis. Now we will be taking these values. On the x-axis we will be taking the sum deposited. We write here sum deposited. Again it's in rupees. This should be clear. Along the x-axis we are taking it and now we have 100, 200, 300. तो अब हम इन्हें 100 से लेकर 1000 तक इंडिकेट करने हैं मार्क्स. तो हम यहाँ पर
सभी को ले लेते हैं, क्योंकि स्पेस इतनी ही है तो हम यहाँ पर एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग एक एक वैल्यू बढ़ाते जाएंगे. वी टेक हियर 100, देन वी टेक हियर 200, हियर वी राइट 300, here we write 400, then we have 500, here we can take 600, here we can take 700, here we take 800, then we are writing 900, and then finally we have 1000. Okay, I hope it's visible to you. Next we have 10, 20, 30, 40 till 100. So again we can mark here 10, then 20, then here we have 30, 40, 50, 60, next is 70, next is 80, then 90 and then 100. Always remember, we mark the points along the dark lines on the graph paper. जो graph paper dark lines हैं उन्हीं पर हम axis draw करते हैं और उन्हीं पर हम numbers indicate करते हैं. And here we have taken simple interest for a year. So we write here simple interest for a year, and it is again in rupees. Okay. Now what scale we have taken, we need to mention it. Scale on x axis we have taken 1 unit equal to 100 rupees. 1 unit equal to rupees 100, and on y axis we have taken the scale as 1 unit equal to how much? Just have a look, 10 rupees increase हो रहा है, so it is equal to rupees 10. Now we can mark the points here one by one. The first point 100 and 10, 100 यहाँ से 10 यहाँ से, ये हो गया आपका first point. Then what else? 200 and then 20, 200 और 20 यहाँ से दोनों तरफ से perpendicularly चलेंगे आप तो ये point मिलेगा. Next we have 300 and then 30, 300 from here and then 30 from here. This point will be there. And then we have 400 and 40. 400 यहाँ से 40 यहाँ से, we have this point. And next we have taken 1000 and then 100. 1000 is here and then 100 is here. We can mark the point here. I hope it's okay. Yes. Now we need to join these points. Let us join them. Again it is coming out to be a straight line, that too passing through the origin. And why is it so? Why is it passing through the origin? Can you tell me? Passing through the origin, this means that when the sum deposited will be rupees 0, then the interest will be 0. This is obvious. जब आप कोई डिपॉजिट करेंगे ही नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. तो जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं रुपीज़ 0 तो एक्चुअली तब आप कुछ भी डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं और तब आपका इंटरेस्ट भी होगा रुपीज़ 0. इसका मतलब कुछ भी इंटरेस्ट आपको पेएबल नहीं होगा और इसीलिए ये ग्राफ पास हो रहा है ओरिजिन से. अगेन वी सी दिस इज़ अ लीनियर ग्राफ एंड अगेन यू कैन सी देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोथ दीज क्वांटिटीज़, डायरेक्ट वेरिएशन, एंड सो वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट line. So I hope the question is clear. We now take 2 points that have been asked here. The first part, the annual interest obtainable for an investment of rupees 250. अगर 250 रुपीज़ यहाँ पर दिए गए हैं जो इन्वेस्ट किए जाएं या डिपॉजिट किए जाएं बैंक में, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये पूछा गया है और ये आंसर हम ढूंढेंगे ग्राफ से. चलिए 250 रुपीज़ ढूंढते हैं. यहाँ पर सम डिपॉजिटेड ये हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, तो 250 रुपीज़ कहाँ मिलेंगे? एग्जैक्टली बिटवीन 200 एंड 300. 200 और 300 के बिल्कुल बीच में हमें मिलेगा यहाँ पर 250. और 250 से अगर हम ग्राफ की तरफ बढ़ें बिल्कुल सीधा और फिर यहाँ से हम मूव करें टूवर्ड्स द वाई एक्सिस, तो ये नंबर हमें मिल जाएगा करस्पॉन्डिंग टू 250 रुपीज़. कितना आ रहा है देखिए, इट इज़ लाइंग बिटवीन 20 एंड 30, सो दिस विल बी 25. तो यहाँ से हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है? वी कैन राइट द आंसर हियर. The annual interest obtainable for an investment of rupees 250 is rupees 25.
we give the answer on the next page. In fact, here we take one more page and give the solution for the first. The annual interest payable for a sum of rupees 250 is rupees 25. ठीक है, ये देखिए आप 250 यहाँ पर था, 200 और 300 के बीच में, यहाँ से हम इस तरफ बढ़े टूवर्ड्स द ग्राफ, ऊपर चले, ग्राफ पर रुककर वहाँ से हमने ये लेफ़्ट साइड जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है उस तरफ बढ़े और फिर 20 और 30 के बीच में एग्जैक्टली हमें 25 नंबर मिल रहा है. एंड दिस शोज़ दैट द इंटरेस्ट फॉर 250 rupees, it will be rupees 25. Okay, and now we take the second part here. The investment one has to make to get an annual simple interest of rupees 70. अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, rupees 70 इंटरेस्ट दिया गया है और ये इंटरेस्ट लेने के लिए हमें कितना डिपॉजिट करना होगा ये क्वेश्चन है. वी मूव टूवर्ड्स द ग्राफ अगेन. अब की बार rupees 70 इंटरेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ rupees 70 हियर. यहाँ से हम चलते हैं टूवर्ड्स द ग्राफ, ये पहुँचे और फिर यहाँ से हम चलेंगे एक्स एक्सिस की तरफ एंड इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू 700. तो हमें क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 70. तो कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, इट विल बी रुपीज़ 700. हमने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ पर रुपीज़ 70 जो इंटरेस्ट है वहाँ पर गए, वहाँ से हमने ग्राफ पर इस तरह से परपेंडिकुलरली ग्राफ तक गए, ग्राफ से फिर वापस परपेंडिकुलरली हम एक्स एक्सिस तक गए और वहाँ हमें ये नंबर मिल रहा है 700. सो नाउ वी कैन इजीली राइट द आंसर. करस्पॉन्डिंग टू annual simple interest of rupees 70 on y axis, we get the sum to be deposited or the investment to be made as rupees 700. So corresponding to annual simple interest of rupees 70 on y axis, we get the sum to be deposited as rupees 700 on x axis. ये हमें कहाँ पर मिल रहा है, x axis पर. So here we have this answer. 70 रुपीज़ के लिए हमें 700 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे और इसी तरह से अगर 250 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा रुपीज़ 25. इन दिस वे वी नॉट ओनली गेट द relationship through this linear graph between these two quantities, we can also derive more informations from this graph. सिर्फ हम ग्राफ ही नहीं बना रहे, उससे और इन्फॉर्मेशन भी डिराइव कर सकते हैं. नाउ वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. हियर वी हैव एग्जाम्पल 8 फ्रॉम योर बुक. Time and distance. Ajit can ride a scooter constantly at a speed of 30 kilometers per hour. Draw a time distance graph for this situation. Use it to find the time taken by Ajit to ride 75 kilometers and the distance covered by Ajit in 3.5 hours. अब इन आंसर्स को तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हमें बनाना है ग्राफ और इस बार हमें बनाना है टाइम डिस्टेंस ग्राफ. और डेटा अभी हमें दिया नहीं गया है, हम अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे corresponding to time and then we will be getting the distance. We draw this table here. Time we have taken as the first quantity in hours and the second quantity is distance covered in kilometers. क्योंकि हमें time distance graph बनाना है तो पहली quantity हो गई time, दूसरी quantity हो गई distance. अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, speed कितनी दी गई है 30 किलोमीटर्स पर आवर. तो hours कितने हो गए 1 hour और डिस्टेंस कितना हो रहा है 30 किलोमीटर्स. इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है. एंड नाउ हियर वी कैन राइट टाइम 1 hour एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज 30 किलोमीटर्स. ठीक है, दिस इज 30 किलोमीटर्स, दिस इज 1 hour. अब अगर हम टाइम लेते हैं 2 hours
तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? इट विल बी 2 × 30, क्योंकि यहाँ पर हमें जो स्पीड दी गई है दिस इज कॉन्स्टेंट. अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h. तो क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो जब 1 घंटे में 30 किलोमीटर्स ट्रैवल हो रहा है तो 2 घंटे में कितना होगा? 2 × 30 किलोमीटर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू 60 किलोमीटर्स. ओके, if we take the time as 3 hours, then the distance traveled will be 3 × 30 kilometers. 1 घंटे में 30 किलोमीटर्स, तो 3 घंटे में कितना हुआ? 3 × 30, इट विल बी 90 किलोमीटर्स. और इसी तरह से अगर हम टाइम लेते हैं 4 hours, then the distance traveled will be 4 × 30 kilometers, and this will be equal to 120 kilometers. Now the points to be plotted, we can write them. The points to be plotted on the graph sheet. These are, write them one by one. Let me take the page little bit upwards. Here the first point corresponds to 1 and 30. Then we have 2 and 60. Then we have 3 and 90. And then we have 4 and 120. ये 4 पॉइंट्स हैं जो हम प्लॉट करेंगे. आप चाहें तो आगे 5 आवर्स के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी ले सकते हैं, 6 आवर्स के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी ले सकते हैं. ग्राफ बनाने के लिए इतने पॉइंट्स इनफ है और इसलिए हम यहीं पर रुक रहे हैं. नाउ वी टेक द ग्राफ पेपर हियर and we have already marked the x-axis and the y-axis. This is x-axis, the horizontal axis, and this is y-axis, the vertical axis. On x-axis we will be marking the time in hours. We write here time in hours. And now have a look. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hours. And for this, since we have enough space, we will be taking up 2 units to represent 1 hour. तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 hour. After 2 units, we will be taking 2 hours. Again after 2 units, 3 hours. Then after 2 units, we have 4 hours. तो ये मार्क कर दिए हमने hours. अब हम यहाँ पर y axis पर लेंगे distance covered in kilometers. Here we write distance covered in kilometers. Okay. Now here we see that the difference between these successive values is constant. 30 के बाद 60, गैप कितना हो गया? 30 यूनिट्स का. फिर 60 से 90 के बीच में अगेन 30 किलोमीटर्स का ही डिफरेंस है. 90 से 120 भी 30 किलोमीटर्स का ही डिफरेंस है. तो हम यहाँ पर इस तरह से ले सकते हैं. 30 ले लिया यहाँ पर, फिर हमने 60 ले लिया, यहाँ पर 90 ले लिया और यहाँ पर 120 ले लिया, क्योंकि सक्सेसिवली जो इनके बीच में डिफरेंस है वो सेम है. लेकिन क्योंकि हमें अभी इन क्वेश्चंस के भी आंसर देने हैं, देखिए इन क्वेश्चंस के भी आंसर देने हैं, सो इट्स बेटर इफ़ वी स्कैटर दीज नंबर्स अलोंग दिस एक्सिस. इन नंबर्स को स्प्रेड कर दें इस एक्सिस के अलोंग, तो उन क्वेश्चंस के आंसर देना ईजी होगा. More information will be derived through this graph very easily then. And for this we will be now choosing a smaller scale. We take here, let me erase this first. आप अगर इस तरह से भी लेंगे तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है. हम एक और तरह से भी नंबर्स मार्क कर सकते हैं. We can take here 10, then 20 here, we can take 30 here, then we can take here 40, 50, 60, then we can take 70 here, 80, next number 90, and then we can take 100, 110 here, and next number will be 120. तो 120 तक हमें डेटा लेना था. Here we can also write 130. Now we need to mark the points. देखिए 1 and then 30. तो चलिए यहाँ पर 1 के along 30, this point, here we have this one. Then we have 2 and 60, 2 यहाँ से और 60 यहाँ से. This point is corresponding to this data. And then we have 390, 3 and 90. And then we have 4 and 120, 4 यहाँ से और 120 यहाँ से. ठीक है, बस अब ये points हो गए. इन्हें क्या करना है अब? Next we need to join these points.
And what we see here, again, is it passing through the origin? Yes, it is passing through the origin, because again we see that when the time is 0, actually when the vehicle is at rest, the distance covered is 0. तो जब स्टार्टिंग हो रही है तब डिस्टेंस कवर्ड 0 है, और इसीलिए ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0. एंड इन दिस वे वी हैव ड्रॉन द लीनियर ग्राफ relating both these quantities, the time in hours and the distance covered in kilometers. So this is the time distance graph as it was asked in the question. Now we will be answering the question, but here we haven't written the scale. We have missed it. Don't miss it. We need to write the scale also. Scale that we have chosen on x axis. What we have taken? 2 units equal to 1 hour. 2 units equal to 1 hour, and also on y axis we have taken 1 unit equal to 10 kilometers. देखिए ये kilometers represent हो रहे हैं, and so 1 unit is equal to 10 kilometers. Okay, I hope the question is complete. हमने x axis y axis पर mention कर दिया है और यहाँ पर इस तरह से स्केल भी लिख दी है. अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ. द टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर्स. देखिए 75 किलोमीटर्स कहाँ मिलेगा हमें? वाई एक्सिस पर. और 75 किलोमीटर्स को आप अगर देखें तो वो मिलेगा आपको 70 और 80 के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर. ठीक है, समझ रहे हैं आप? और हमसे क्या कहा गया कि उसके लिए कितना टाइम लगेगा, 75 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा. तो 75 से हम पहले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं इस तरह से, और फिर ग्राफ से हम यहाँ चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ. अब बताइए कितना टाइम लगेगा. दिस इज़ द पॉइंट 75 किलोमीटर्स रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ से, और ये टाइम आ रहा है आपका 2.5 आवर्स, 2 और 3 के एग्जैक्टली बीच में. और इससे हमें पता चल रहा है द आंसर टू दिस क्वेश्चन. The time taken by Ajit to ride 75 kilometers. We can write the answer on the next page here to the first part. Corresponding to 75 kilometers on vertical axis or say y axis, we get the time taken to be 2.5 hours. Okay, and so we can write the answer in terms of the question. The time taken by Ajit to ride 75 kilometers, we write here. Hence, the time taken by Ajit to ride 75 kilometers is 2.5 hours. ओके, ठीक है. आप इसको 2.30 इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते थे. 230 hours इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगेन इट मीन्स 2.5 hours. Then we have the second part related to this question. Let us go back to the question here. The distance covered by Ajit in 3.5 hours. तो अब वापस से ग्राफ पर चलते हैं. 3.5 hours कहाँ मिलेंगे? 3 और 4 के बीच में. यहाँ पर हमें मिलेगा 3.5 hours. और अब इसके लिए हम फिर से यहाँ से चलेंगे ग्राफ की तरफ इस तरह से, और फिर यहाँ से हम लेंगे y एक्सिस की तरफ, और ये हमें दे रहा है पॉइंट. This is between 100 and 110, so it relates to 105 kilometers. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? Let me write on the next page. Corresponding to time 3.5 hours on x axis, we get the distance covered
to be 105 किलोमीटर्स। ठीक है, और यहाँ हमसे यही पूछा गया है, देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत इन 3.5 आवर्स। तो अब इसको फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय अजीत in 3.5 hours is equal to 105 किलोमीटर्स। और ये हमें कैसे मिल रहा है, एक बार फिर से देखिए। यहाँ जब हमसे पूछा गया कि 75 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो हमने यहाँ पर y एक्सिस पर 75 किलोमीटर्स को लोकेट किया। यहाँ से हम हॉरिजॉन्टली चले ग्राफ की तरफ, ग्राफ पर पहुँच के वहाँ से हम वर्टिकली नीचे आए और उससे करस्पॉन्डिंग टाइम हमें मिल गया 2.5 आवर्स। और फिर जब हमसे पूछा गया कि 3.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो हम यहाँ 3.5 आवर्स लोकेट करते हैं एक्स एक्सिस पर। यहाँ से हम वर्टिकली ऊपर गए ग्राफ की तरफ, ग्राफ पर पहुँचकर वहाँ से हम मूव किए वाई एक्सिस की तरफ, और तब हमें मिल गया करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 आवर्स एंड इट इज़ इक्वल टू 105 किलोमीटर्स। तो हमने न सिर्फ ग्राफ ड्रॉप किया है, बल्कि ग्राफ से हम और इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्ट कर सकते हैं। इन दिस वे टुडे वी हैव लर्नड सम एप्लीकेशंस ऑफ line graphs and linear graphs. I hope all these examples are very much clear. Also the independent and dependent variables, this concept is also very much clear. Then bye for now, and soon we will meet in our next class.